उसका मुझे चांस मिला था धूम ब्रोस के साथ. उनका वेब सीरीज थी 2017 में उनके साथ किया था, and it was just even for like it was just like one episode and a little bit of another one. It was just the best time ever, I think. मेरा नाम है शाहिद इकबाल और मैं हूँ होस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिएटिव शो का. हमारे शो के डायरेक्टर हैं सैयद काशिफ. आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर लिखने और पढ़ने में बहुत ही नाम कमाया है. तो आइए सुनते हैं महानूर की कहानी, महानूर की ज़बानी. लेकिन महानूर ने भी यही कहा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें. कैसी हो महानूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में. Thank you for having me. Well, thank you for coming. मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा था जब थोड़ा टाइम गुजर गया, तो मैंने कहा कि लगता है महानूर नहीं आएगी आज. नहीं मैं जिस टाइम पे मैंने कहा था मैं उस टाइम पे आई हूँ. नहीं I wouldn't have missed this. Thank you. थैंक यू वेरी मच महानूर. आई नो जो अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, तो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को बताओ अपने बारे में ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तानी अमेरिकन शो में बहुत डाइवर्स लोग आते हैं और आते रहे हैं. और ये वाला सीज़न जो है इसमें हम बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो दैट्स अनदर रीज़न व्हाई यू आर हियर. तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लोगों से करवाओ. Well, I'm Mahnoor Khan, and I think I can best identify myself by my current job role. I work for Fortune magazine right now. I am a social producer for them, so I work for the editorial team, make sure that their stories get um, awareness on social media and they get traffic, and that's basically what I'm doing right now. Before this, I was writing a little bit for them, so kind of dabbled in the journalism space, even though my educational background is not in journalism, it was in marketing and finance. So that's my small introduction. Absolutely. Yeah. Zabardast. So, I think you are the only desi in Fortune magazine. So this is what I was saying. I think I'm the only other one. The only other guy that I saw, he looked like a desi, sounded like a desi name. I haven't met him. I don't know if he's still with the company, but I know that I'm the only desi girl there for sure. So that is something that I'm proud of, and I think Muslims भी इतने नहीं हैं, या नहीं हैं I think मेरे अलावा, तो it's quite interesting how I ended up there. Yeah. तो कैसा लग रहा है अभी? एंजॉय कर रही हो? मज़ा आ रहा है? Yeah, it's been a crazy journey actually. 1 साल हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए. अभी कुछ दिन पहले मेरी 1 year anniversary थी कंपनी के साथ. I started off as an intern, and वो 6 months की ही internship थी, and 6 months का एक वो उनका turnover होता है, so it was like करके आपने ख़त्म होना है, but I was just determined कि मुझे full time offer किसी भी तरह से मिल जाए. तो internship भी social media की internship थी, and that's my area of interest, but somehow कुछ इस तरह से हुआ कि I started writing for them, and it was just an amazing experience. I didn't know कि मुझे इतना मज़ा आएगा. I got to interview like a lot of cool people, entrepreneurs, CEOs of different startups, companies, and it was just amazing. Like every day, it was like a new thing, new story, new people, and it was just I had a great time. And then they just took me on full time, and अब मैं social media की साइड पे आ गई हूँ, जो मेरा ओरिजिनल प्लान था, तो वो भी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स गुड. ज़बरदस्त. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आई थिंक तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात sometime 2015 15ish. जी 2015 में थी. I think 15th का एक PSA शो था. जी PSA शो था, और आपने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और आपने ऑडिशंस लिए थे, और मैं बहुत बुरी एक्टिंग करी थी, लेकिन आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया था लीड रोल के लिए. यस आई रिमेम्बर. और फिर तुम जिस क्या कहते हैं छा गई
उन पूरे सालों में आई थिंक 2016, 2017, and then until you graduated in 2019. A little. I mean, initial years I was very much involved in the organization PSA, जिसकी बात हो रही है, and I had a blast the first year जब PSA show किया था, because actually मैं passion जो मेरा like होता है ना बचपन का ख्वाब is has always been acting. वो क्योंकि हम लोग के देसी फैमिलीज में इतना ज़्यादा उस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता, लाइक डिग्री लो जॉब करो, डिग्री लो जॉब कर हाँ लो. हाँ, तो वो चीज़ इतना वो नहीं हो सका अभी तक. नहीं अभी भी हुआ है मानो, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है, हाँ. लेकिन जिस लेवल पे ऑब्वियसली इट्स लाइक फुल टाइम करियर जो मैं सोचा हुआ था अपने लिए वो तो अभी तक नहीं हुआ actualize, but inshallah let's see what happens. But yeah, I just had a blast the first time it was like performing on stage. I remember like I had like a panic attack backstage before going on stage, and I was crying and just like, but once I went on stage and the lights and everything, it was just amazing. And uske baad like थिएटर की और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. यहाँ पे टीजी प्रोडक्शंस है, उनके साथ काफ़ी काम करने को मिला. एंड वन ऑफ द हाइलाइट्स, एंड I think more than stage, I like being on camera. Like I want to be on film, seeing myself on the screen and everything. So, उसका मुझे chance मिला था धूम रोज के साथ. उनका वेब सीरीज थी 2017 में उनके साथ किया था, and it was just even for like, it was just like one episode and a little bit of another one. It was just the best time ever, I think. So hopefully I can keep trying to do something like that. Yeah. नहीं आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. Yeah. और अब तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स और होने लगी हैं, और डाइवर्स लोगों के साथ होने लगी हैं. Yes. You should see some of the social, not social, but online film platforms like Tubi or yeah. Freevee and others. I mean, I know a few people who are just producing film after film. I know that too. You know, so I think तुम्हारे chances अभी अच्छे हैं. It's looking good. और फिर मतलब इन सब चीज़ों के साथ जो तुम्हारी personality में एक मुझे contradiction तो नहीं, but I would say कि डाइवर्सिटी दिखती है. वो ये कि तुम कुछ ऐसे कॉजेज़ के लिए भी काम करती हो जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं. या सो एक हाँ, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होती है, and then it helps you discover things that you didn't know you would have to face or be involved in. And शुरू से you know, I've been very much inclined towards anything artistic, like acting ले लें, drawing, dancing, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मेरा होता है. So a little bit about me. I got married right after I graduated, and पसंद की शादी and everything, माँ बाप से लड़के whatever सारा कुछ होके and then it turned out to be a very bad decision. There was a lot of domestic violence and all of that I had to go through. And then last year I made the decision कि अब बस बहुत हो गया, वापस आना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है. I have to put myself first. And it was a tough time. Like I went through it with like for 3 years. And the past year just dealing with coming back to Houston from Pakistan, restarting my life, and just getting back up on my feet, dealing with the trauma, all of that stuff was very difficult. I'm not gonna lie, but I think when you go through something traumatic like that, I think you start to question ke, you know, why me, like mere saath kyun hua? And to kind of deal with that questioning, I was like, rather than I become depressed and start like hating myself for going through that, I should try to help people if I can, or you know, just मेरे लिए वो एक therapeutic एक चीज़ बन गई थी. Social media पे like I have a small Instagram, तो हर कोई ही use कर रहा है आजकल, तो public page है, उस पे मैं mental health के बारे में पहले भी बात करती थी very openly. Depression वगैरह से मैंने पहले भी deal किया हुआ है.
तो आई बिन वेरी ओपन अबाउट इट. जब मैं वापस आई तो मैंने इसके बारे में भी बताना शुरू कर दिया कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था. और लोग ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, विच इज़ ईच टू देयर ओन, बट मेरे लिए वो हेल्पफुल था. एंड people started, opening up. opening up. Yeah, And I was yeah. like, okay, well, if I'm being vulnerable, itna openly sabko main baat kar rahi hu, then people feel safe and they trust you to then share their own issues. And it's like ek ke baad dusra, dusri ke baad teesra, aise messages, people that I knew personally and people that I didn't know. Didn't know. Right. And the shocking thing was कि जिन लोगों को मैं personally जानती थी और मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ ये सारे मसले चल रहे हैं. तो it's like मुझे लगता था कि ओ सिर्फ मेरे साथ ही ये मसले हैं, लेकिन everyone is putting up some sort of a front and everyone is going through something. So it just it was a big reminder that you just have to be kind to everyone. And I think it's just been, I think it's a blessing, alhamdulillah, that people trust me enough to reach out and share their issues. और मुझे पता है कि मुझे इतनी हेल्प हुई थी जब कोई बस सुन लेता था बात मेरी, you know. So if I can do that for other people, I think all the stuff that I went through, maybe it was worth it. Or yeah, maybe it was for a reason, right? Maybe it was for a reason. Yeah. Trying to find the reasons. Trying to find the reason. नहीं, I think I believe कि चीज़ें हादसाती नहीं होती. There is a bigger planner than all of us. Oh yeah, for sure. It just goes to show what elements or aspects of life we haven't discovered had we not gone through that traumatic or unsavory thing, right? बहुत ज़बरदस्त. तो ये बताओ कि आजकल क्या कर रही हो? I know job भी चल रही है. तुम I think in the last 6 months you were in a theatre play and then you were not in the theatre play. So what's up and coming 2023? क्या लेके आ रहा है तुम्हारे लिए? क्या अज़ाइम है? क्या प्लानिंग है? थोड़ा सा बताओ हमारी ऑडियंस को. प्लानिंग तो बहुत चलती रहती है, बहुत चीज़ों की इधर उधर हाथ डले हुए होते हैं. बट अभी मेरा फोकस यही है, जॉब चल रही है, उसके अलावा आई एम ट्राइंग टू ऑडिशन for things that come by. Like there was an independent film, auditioned for it, got the lead role, but unfortunately then there's like requirements that I can't do. So I had to forgo that. I was like, I'm sorry, I can't kiss on screen. so इस तरह के hurdles आते हैं. So it is what it is. I mean, you keep trying. And just put your effort in. तो अभी यही है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऑडिशनिंग चल रही है. I really want to go to Pakistan and try to work there. It's a little tricky because my job is here and then आपको वहाँ जाना है. So that is the kind of thing that I'm trying to figure out right now. उसके अलावा जैसा आपने ये पॉडकास्ट माशाल्लाह से आपने तो कल भी सेटअप कर लिया, सब हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है. बट आई एक्चुअली केम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ माई ओन पॉडकास्ट एंड दैट वाज to talk to just everyday people. They don't have to be big shots, and just hear their stories, their struggles, life में कोई इस तरह का जिस तरह का हादसा or anything that they've been through and how they cope with it, how they came out of it. Just sharing their like raw stories. तो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट सोचा हुआ था. 1-2 एपिसोड्स भी शूट करके रखी हुई हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत साइड पे काम है. एंड मैं सोशल मीडिया पे अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो बस ये इसी तरह ज़िंदगी चल रही है. गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ. गुड. एब्सोल्युटली. जो और फिर बाकी जो तुम्हारे सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त थे उन सब से भी कीप अप रखती हो? जी वो सब दोस्त हैं आपस में, सब मिलना जुलना सब है. सो like the 2 years that I was out of the country, while I was married, and just trying to bring everything back and get back into the flow of how I used to be and how I was, maybe like a better version of what I was before. So that is the goal abhi. Yeah. Zabardast. See? नहीं, thank you very much for coming. I really appreciate it. और
अगर तुम्हें अपने भी काम के लिए कोई हेल्प चाहिए हो तो काशिफ इज़ हियर, आई एम इज़ हियर, ऑलरेडी मैं आई सोच रही आई एम थी. हियर एज वेल, विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल. और आई थिंक आइडिया ही यही है कि मतलब जब से मैं अमेरिका आया हूँ मैं तो सिर्फ यही सुन रहा हूँ कि पाकिस्तानी या तो डॉक्टर्स होते हैं Hmm. या कैब ड्राइवर्स होते हैं. Oh, what मिडिल a मिडिल में extreme. कुछ नहीं है, सही Middle है में ना. कुछ नहीं. बट आई थिंक बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो उस मिडिल एरिया में हैं, Hmm. ठीक है ना. और उसके अंदर एक छोटी सी माइनॉरिटी है जो क्रिएटिव है. Hmm. तो आई थिंक उसको वो स्पेस मिलनी चाहिए, Yeah. उसको वो अटेंशन मिलनी चाहिए. Yeah. और आई थिंक मिल सकती है Yeah. अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें तो. Yeah. तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का. Oh, thank you so much. हमें बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करने का. और आई होप कि जो लोग इसको सुनेंगे उनको थोड़ी सी आगाही मिलेगी चीज़ों के बारे में. जी. वो भी थोड़े से निडर होंगे और थोड़े से एम्बिशियस होंगे और they will reach out to you and to Whoever, just whatever just seek cause. help. If you need it, Absolutely. ask for help. I mean, Absolutely. don't make the mistake of not asking for help. Yeah, That's, yeah. And trust me, I have very little resources, but I don't shy away from asking. Yeah. And a lot of times, the things I end up doing is just because I asked. Yeah. क्योंकि अगर आप ना पूछें, Then you have zero chances of zero of chances getting. anyway, right? Yeah. So might as well पूछ लें. Might as ज़ाहिर सी well. बात है, क्या मिलेगा? No No मिलेगा ना. मिलेगा. Exactly. तो वो तो पता है आपको. Exactly. Yeah. Wonderful, wonderful. Thank you very much for coming. Thank you so much, Shahid bhai. It was और आई wonderful. थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी है पर हमें फॉर वेरियस रीजंस इसको यहाँ रोकना पड़ेगा, लेकिन हम दोबारा इसमें ज़रूर आएंगे. Inshallah. और अभी तो सिर्फ आगाज़ है, आगे आगे देखें होता है क्या. Yeah, right? good luck to all of us. Thank ठीक you. है, ज़बरदस्त. थैंक यू.